Good morning. Today our chapter name is frequency distribution tables and graphs. Chapter number is 7. Chapter name is frequency distribution tables and graphs. In previous class we have to discuss about frequency distribution tables and graphs, and in that we have completed exercise 1, and we have to started exercise 2. uh, Exercise 2 also. The first part of exercise 7.2 and second part of exercise 7.2 we have finished in the previous class. So now we will continue the remaining problems of exercise 7.2. So the next problem is, now we will continue the remaining problems of remaining problems of exercise 7.2. So the next problem, continuation of previous class, the next problems will be fourth one. What is our next problem? In previous class we have to finish it first problem, and second problem is your homework problem, and third problem is finished. So coming to our next problem, is fourth problem. So the fourth question, given that in the following grouped frequency distribution table class mark are given. grouped frequency distribution table में class marks हमको दे दिया. class marks और frequency are given. So what is class marks? 10, 22, 34, 46, 58 and 70. What is frequency? 6, 14, 20, 21, 9 and 5. This is our data. So question. First question is construct class intervals of the data. Construct the class intervals of the data. क्या फाइंड आउट करो बोल रहा अपन को? क्लास इंटरवल फाइंड आउट करो बोल रहा. किस क्या कौन सा क्लास इंटरवल? exclusive class interval. Exclusive means upper boundary of first class, lower boundary of the next class will be same. Exclusive means upper boundary of first class, lower boundary of the next class will be same. So second question is construct less than cumulative frequencies and construct greater than cumulative frequencies. So frequency are given, we have to find out the less than cumulative frequencies and greater than cumulative frequencies. So first question is construct the class intervals of the data. First question is construct the class intervals of the data. So how to construct the class intervals? Let us see. To construct the class interval, first you should know the class length. You should know the class length. class interval मालूम करने के लिए हमको फर्स्ट क्लास लेंथ क्या है मालूम रहना, तो अपन क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर सकते. क्लास लेंथ is denoted by h. It is also known as class height. class height, class length is same. class height भी बोल सकते हैं उसको, class length भी बोल सकते. So now what is class length? Class length means the difference between any two consecutive class marks will be given, called as the class length. Difference between any two consecutive class marks is known as class length. So class height h equal to 22 minus 11. difference between any two consecutive class intervals. कौन से भी दो क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस क्या होता? क्लास लेंथ होता. एग्जाम्पल 22 minus 10, 12. What is our class length or class height? 12. h equal to 12. For writing class intervals, we should know lower boundaries and upper boundaries.
lower boundaries and upper boundaries. Lower boundary of first class intervals, first of all. So lower boundary of first class interval equal to, what is formula? X minus h by 2. X means class marks. X means class marks. So X means class marks. So next, our formula x minus h by 2. First, what is class? 10. 10 minus h, 12 by 2. 2 ones are 2, 6 are. So 10 minus 6 equal to 4. What is lower boundary of first class interval is 4. फर्स्ट अपन लोअर बाउंड्री या फर्स्ट क्लास इंटरवल मालूम कर लिया. नेक्स्ट क्या मालूम करना? अपर बाउंड्री मालूम करना. अपर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल मालूम करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एच बाई 2 इज लोअर बाउंड्री का फॉर्मूला है. तो अपर बाउंड्री का फॉर्मूला क्या रहता है बोले तो एक्स प्लस एच बाई 2. अपर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल्स इक्वल टू एक्स प्लस एच बाई 2. सो व्हाट इज एक्स? 10 plus h is 12 by 2. So 2 ones are 2, 6 are. So 10 plus 6, 16. Upper boundary of first class intervals equal to 16. We know the class size means class height. How much? H equal to 12. So we can write all the class intervals. Let us go remaining class intervals. Next, what is our upper boundary of first class interval? 16. So 16 equal to, what is size of class size? What is class size? 12. 16 plus 12. 16 plus equal to 28. So our class interval is start with 16 to 28. It is our class interval. Next we should write to 28. Next plus 12. 28 plus 12, 40. So these two are going to write in the tabular form. So this is our table. This table is divided into how many columns? 1, 2, 3, 4, 5 columns. First column is class marks. Second column is frequency. Third column is class intervals. Fourth column is less than cumulative frequencies. Fifth column is greater than cumulative frequencies. In our question, what the class marks is given? 10, 22, 34, 46, 58, 70. ये क्लास मार्क्स क्या करना? सेम एज अपने टेबल में क्लास मार्क्स के प्लेस पे लिख लेना. नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आल्सो गिवन. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 6, 14, 20, 21, 9 एंड 5. ये फ्रीक्वेंसी अपन सेम अपने टेबल में लिख लेना. Our first interval is 4 to 16. Second interval is 16. 16 plus 12. 16 plus 12 is 28. Next 28. 28 plus 12. 40. Next 40. So 40 plus 28, 52. Next is 52. 52 plus 52 plus 12, 64. So our next class interval is 64 to 64 plus 12, 76. So
Next, coming to the next column, this column belongs to less than cumulative frequencies. Less than cumulative frequency. LCF nothing but less than cumulative frequency. तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा मालूम करना हुआ तो अपन को फर्स्ट एक फ्रीक्वेंसी दिया होने क्वेश्चन में, क्या है ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, 6 का 6 लिख लेना. सेकेंड वन में जो है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड फ्रीक्वेंसी करना, 6 प्लस 14 इक्वल टू 20. तो अब नेक्स्ट स्टेप जो रहता, ये आंसर आया, ये आंसर प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20, 40. सो 40 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 21, 61. सो नेक्स्ट 61 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 9, 70. So next is 70 plus 5 is 75. Coming to our next column, our column is greater than cumulative frequency. GCF nothing but greater than cumulative frequencies. So GCF कैसा मालूम करना बोले तो हम आपको ये क्या आया लास्ट में 75, तो अपन क्या लिख लेना, फर्स्ट 75 लिख लेना. फिर नेक्स्ट स्टेप में 75 माइनस 6, हाउ मच, 75 माइनस 6 69. सो नेक्स्ट 69 माइनस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 14 इक्वल टू 55. सो नेक्स्ट 55 minus next frequency 20. So our answer is 35. So 35 minus next frequency. What is next frequency? 21 equal to 14. So our next frequency is 14 minus next frequency is 5. So finally next frequency is 9. So 9. 14 minus 9 is 5. So फ्रीक्वेंसी ऑफ ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी अब मेरे को आंसर में सेम आता है, ये चेक कर ले तो अपना आंसर राइट रहता है. ऑब्जर्व करो, ये ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वन एंड हमको गिवन डेटा का फ्रीक्वेंसी का लास्ट वन आर सेम. समेशन ऑफ LI, ऐड दिस टोटल, ये पूरे ऐड करे तो समेशन ऑफ LI आता. कितने होते हैं, 75. ये पूरे ऐड करे तो 75 होते हैं. दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. थैंक यू.